First of all, a very warm welcome to you, Dwishojoyee, at Inspiring Talks. And we are really so honored to have you in our show. And we are looking forward to hear from you. Your all the struggles or the success or the challenges that you have faced so far, but in an informal way, of course, so that people get to know better. So we'll start with the first question without any delay. So I would like to ask, like, since you have done your education in Patna, right, in Patna, Bihar, and right, okay, हाँ so हाँ yeah, जी yeah. So and now you are studying in Delhi. So how you feel that हम्म all those events or all those experiences that help you to shape your personality, what you are at the present, right? So any specific event that you would like to mention, or any specific incidents since your childhood to up till now? Like suppose if I want to alright. know, like suppose if I want to introduce you to my audience, so they should get little background that what were those incidents or those scenarios that has helped to shape your personality, what you are today, like what people are seeing as now. So yeah. That's a very very beautiful question, Abhinav. In fact, अच्छा पहले तो thank you so much for having me. I have been looking forward to this conversation since a very very long time. So it's a pleasure being here, first of all. Uh, जैसा कि आपने कहा, without much ado, let's jump to the questions. So I think there is no one event in the entirety of each one of our lives which can completely mark us like ये ऐसा हो गया तो फिर हम ऐसे हो गए. There are multitudes of events, there are multiple events which take place. However, if we come to education, जिसके बारे में आपने बात कही अभी, education and how it was different in Patna and Delhi, if I'm not wrong, that's what we were talking about. um, One thing which has really shaped me is that when we come to this whole concept of change making as a profession, as a space for people to come together and create a difference, a lot of times we talk about diversity and inclusivity. मतलब ये तो हर change maker का बिहार में कहते हैं तकिया कलाम, which is after every sentence you will use it. So everywhere you go, there is this diversity, inclusivity, unity, diversity, inclusivity. To be very frank, there is no diversity inclusivity in the change making which is recognized. However, when I was in Patna, the school that I went to, Don Bosco Academy, हमारी कक्षा में जो डायरेक्टर सर थे, स्कूल के डायरेक्टर थे, his son, his grandson, and the son of one of the peon bhaiyas studied in our class, and nobody treated them differently. Not because we were given these value addition lessons or moral lessons that, okay, you should be moral, you should be, be inclusive of them. There was no such talk. People were inclusive. There was no elitism that surrounded it. So I think that has really, going to Don Bosco Academy, एंड अगर आप बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी, तो द थॉट प्रोसेसेस आर डिफरेंट. देयर आर पीपल फ्रॉम वेरिड बैकग्राउंड्स. सो आई थिंक दिस has more than anything else shaped me as a person and taught me diversity, inclusivity, unity before I came to know of those terms as something which is treated very important these days. Like every award you go to, every where you're invited, panel diverse होना चाहिए, panel inclusive होना चाहिए, award की categories में होना चाहिए कि okay, you are paying respect to everyone. So it's in a very mechanized form. However, it was fed to me in a very, very raw and pure manner when I went to the school that I belong to. So I think, yeah, that's something that maybe has changed, that maybe has shaped me, जैसा कि आपने कहा, to be the person that I am. Yeah, so yeah, that's impressive. So my second question is like, since you are a change maker and many people look up to you as an inspiration, so मेरे mind में like generally question आता है कि like if someone wants to be a change maker, उनमें क्या Mhm. क्वालिटीज होनी चाहिए, बेसिक क्वालिटीज, वो किसी भी फील्ड में जाए. इट डजेंट मैटर कि लाइक यू आर वर्किंग फॉर एनवायरनमेंट, तो वो किसी भी फील्ड में जाए, बट Mhm. as a change maker, what qualities should I have?
दैट्स अ फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड पार्ट, इफ आई एम हैविंग एनी आइडिया, मेरे पास कुछ भी आइडिया है, रॉ आइडिया है, तो आई मेनी टाइम्स आई फेल्ट दैट उसको एक ग्रास रूट पे लेके जाना, उसको एग्जीक्यूट करना, इट्स अ वेरी डिफरेंट, वेरी चैलेंजिंग. So how someone can deal with that? Because I feel achievement हर फर्स्टली कोई देखता है, like you have achieved so many things, but that struggle no one sees. So yeah, स्ट्रगल और उससे भी ज्यादा, लाइक यू हैव यू आस्किंग लाइक टू बी अ चेंज मेकर, व्हाट आर द प्रीक्विजिट्स इफ यू पुट इट दैट वे. yeah, yeah, फर्स्टली, लेट गो ऑफ द ग्लैमराइज पार्ट. अवार्ड मिल गए, आप कहीं पे, ओ टुडे वी हैव 5 nominees एंड द यंगेस्ट वन इज विश्वजॉय. ठीक है, बहुत बढ़िया. टू बी अ यंग वुमन एट द टेबल एंड बीइंग, बहुत बहुत अच्छी चीज है. बट देन देयर आर अ लॉट ऑफ डाउन साइड्स टू इट. सो like you said, that shouldn't be something जिससे आप इंस्पायर हो टू बी अ चेंज मेकर, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, चेंज मेकिंग अब इतने ज्यादा ऊंचे पैमाने पे उसको रख दिया गया है कि ओके, लाइक सम यंग पर्सन इज कमिंग अप विद आइडियाज एंड डूइंग समथिंग, बहुत बढ़िया चीज है. बट देन द आइडिया बैक इन द डे वाज, इफ यू हैव एन आइडिया, you come into change making. Now I see so many people coming into change making and then trying to find out मैं क्या कर सकता हूँ. वो नहीं होना चाहिए. If you have a problem that you can see, I can see you smiling, Abhinav. So I guess you're able to relate. So firstly, the idea is, अगर आपको problem दिखे सोसाइटी में, तो उसको जाके सॉल्व करो, प्रॉब्लम क्रिएट मत करो. है ना? अगर ग्लैमर चाहिए, वो चाहिए, तो बहुत सारे माध्यम है उसको अचीव करने के लिए. है ना? You don't have to be another change maker of the sort. So if you see a problem, try to solve it. And if you genuinely see a problem and you also, चलो ठीक है, सबको पसंद आता है ये awards and everything, आप वो उससे भी influenced हो, then strive for a solution at the root causes. बहुत ही सिंपल सी और आसान सी भाषा में अगर कहूँ, तो आप जब तक कचरा साफ करते रहोगे, कचरा आता रहेगा. आपने एक दिन क्लीन अप कर दिया, आप 6 महीने बाद भी जाके क्लीन अप कर रहे हो, तो मतलब उन 6 महीनों में कचरा तो नहीं रुका ना. तो द आइडिया ऑफ अ चेंज मेकर एंड नॉट अ सोशल एक्टिविस्ट, यहाँ पे फर्क आ जाता है. वाई द टर्म चेंज मेकर वॉज इंट्रोड्यूस. आज से 5 साल पहले चेंज मेकर एज अ टर्म बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे. ये पिछले 5-10 सालों में ही आया है. तो यहाँ पे जो है, दिस डिफर्स फ्रॉम सोशल वर्क एंड चेंज मेकिंग, है कि आप रूट कॉज तक पहुंचे. आप देखें कि वो कचरा क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, एंड सॉल्व इट एट द रूट. That is change making. And whenever you have a problem, Nike is a very famous brand. वो कहता है ना, just do it. I say, don't just do it. Sit with the idea, think about it, सोचो, question करो, get to the root causes, and then find a solution. And then glitz and glamour are very like good. आपको अच्छा लगेगा 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, फिर वो इतना अपीलिंग भी नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. yeah. तो हाँ, यही बात है. Okay, so like you are associated with various change making process, or abhi bhi, like you are working on so many projects. So have you ever felt like कि whatever I have achieved, like it's done, like I have to take a pause and focus on my personal life as well? Because in starting तो excitement रहता है, like I have to do this, do that, but वो जो process आता है ना, like if I share my example, I started writing a novel. स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटमेंट था, हम्म. बट जो राइटिंग प्रोसेस होता है इट्ससेल्फ, इट्स कि उस हम्म. पर्टिकुलर फेज में नो वन रियली लुक्स हम्म. एट यू, जो आपका डे टू डे लाइफ स्ट्रगल हम्म. होता है. बट हाँ, अगर वो मैं लिख बिल्कुल. दूंगा तो लॉट ऑफ पीपल विल अप्रिशिएट. तो वो एक मोटिवेशन, एब्सोल्युटली. हाउ यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड कि अब मुझे और इस फील्ड में और कुछ करना है, टू डू एंड प्रोग्रेस. मेरा मानना यहाँ पे थोड़ा सा अलग है. व्हाट आई बिलीव इज दैट मोटिवेशन इज जस्ट फॉर amateurs. The rest of us just need to sit down, burn the lamp, do the work, get it over with. Because because that's the thing about passion. Passion burns out. Passion आपको 2.5 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल ले जाएगा. Because if you want to make this a side thing, anyone, anything, जब तक वो आपकी हॉबी है, you're passionate about it, it makes you happy, right?
So you'll be motivated because it gives you happiness. There is some uh, incentive that you're getting, right? Which is a satiation, which is a satisfaction. But when you take up something full time, you have to face the reality that this is going to be something which will squeeze the hours out of you, which will ask your brain to process a lot of things. And अगर इससे ज्यादा ब्लेटेंट मैं नहीं हो सकती, बट इतना ब्लेटेंट होगी कहूंगी कि आपको उसी से अपने जो मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है उसको भी देखना है। तो जब बात वहां पे आती है, देन इट बिकम्स वर्क, एंड वर्क इज नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल, एनी वर्क। अगर आप, यू आर अ राइटर राइट, समटाइम्स यू लाइक ये प्लॉट मुझे खत्म करना है, करना ही पड़ेगा, स्टार्ट किया है मैंने। आप पैशन से 2.5 पन्ने लिखोगे, 10 पन्ने, या पहली किताब, दूसरी किताब, चौथी किताब, उसके बाद आपको लगेगा ओके फाइन, आई हैव टू केटर टू द ऑडियंस इन अ वे, और इफ आई हैव टू केटर टू माई सेल्फ, इवन देन आई हैव टू बी ट्रूथफुल, इट्स वर्क। सो motivation is for amateurs. After a certain point in time, you won't be motivated. You'll just know that this is something that I have to do, and I have to do. Simple. That's how I take it. Yeah. To be very, very honest. That's the right process, I think. So yeah. So my next question is like people know about lot about your achievements, about your journey. One thing that you would like to share, जो मुझे नहीं पता as a person, as an interviewer, and that might be anything. It might be interesting, inspiring, fascinating. So yeah. Uh, या अचीवमेंट्स के बारे में लोगों को पता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं। Hmm. What is something that people don't know about? ऐसे तो कई चीजें हैं which people don't know about me. Uh, One thing I would want to share maybe would be that deep down somewhere or the other, I'm a very, very simple girl who aspires to, at some day when I'm 35, I have a child and I'm making food for them and serving my guests and being a housewife, a homemaker. Housewife अभी लोग use नहीं करना चाहते term, homemaker. So yeah, I think this is something that nobody guesses about me, because until and unless they get to know me very personally. But yeah, this is something I think I've never spoken about, never been asked about as well, because I think मेरी वो एज ही नहीं है कि लोग ऐसी बातें पूछे मुझसे. But yeah, that is something I would like to share. Deep down, I'm just someone. I'm not completely like, okay, I'm ambitious and that is my everything. It's not. Very homely. Like I want to make chai, serve chai. ये लीजिए समोसे मैंने अपने हाथों से बनाए. Everything. So yeah, that's something that nobody knows about me, or would guess. I guess. I Yeah. guess nobody would guess that as well. Basically, we can say those simple things in life, right? Uh, Yeah. Not so lavish. Yeah. So yeah. So my next question is like, have you ever felt like you are a change maker? So you must have experience. Like मैंने तो बहुत feel किया है when I am into writing and doing lot of stuff. It is very hard Mhm. to make like जो relatives आते हैं normally हमारे घर पे. They ask about what you are doing. So it's very hard to explain them. And especially when you are a change maker, I guess it must be very hard for you. So how like generally how is their reaction to you, whatever you are doing? I guess yes, parents must be very supportive, but other than that, what is the general reaction in your like of your relatives, friends? नहीं, So हमारी खुशकिस्मती है. हाँ, नहीं, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे relatives have been very supportive, but then there is mhm. always this like, one day I'll share an anecdote with you. One of my best friends mother, we are very good, like we talk to each other also, like auntie is a second best friend to me. ठीक है. She was talking to me and she was like, बेटा bachelor's complete कर लेना. But I was like, हाँ. I mean, she had this notion somewhere that okay, now she has an organization, somewhat वो organization अब चल भी रहा है. तो उन्हें ऐसा, पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगा था कि अभी शायद ये ड्रॉप ना ले ले, ड्रॉप आउट ना कर ले. तो ये एक जुमला है. खैर, उसके अलावा भी चेंज मेकिंग को एज अ करियर लोग कभी भी देखते ही नहीं है. बट इफ यू कम टू एनी एनीथिंग विच इज सेंटर से थोड़ा सा भी इधर उधर ना, जो लोगों का ऐसे होता है कि अच्छा ये किया तो ठीक है, ये नहीं किया तो गलत है.
विच इज अबाउट एवरीथिंग। इफ यू आर लाइक इन सोसाइटी, अगर आप मास्टर्स कर रहे हो एंड उसके बाद आपने अगर या मास्टर्स या बैचलर्स के बीच में आपने गैप ले लिया, इवन दैट इज समथिंग पीपल क्वेश्चन अ लॉट, क्यों लिया? या ट्वेल्थ के बाद अगर नहीं पता है क्या करना है तो भी लोग क्वेश्चन करेंगे। या इवन लाइक अगर थोड़ा और उम्र की और अगर बात करें, तो इफ यू डोंट गेट मैरिड बाय अ सर्टेन एज पीपल क्वेश्चन, इफ यू डोंट हैव किड्स बाय अ सर्टेन एज पीपल क्वेश्चन। माय आइडिया इज डोंट आंसर देम, लाइक डोंट आंसर लाइक हाँ आप सही बोल रहे हो, राइट, आप कंसर्न हो, आप कंसर्न नहीं होते तो मेरा क्या होता। नहीं, ऑनेस्टली, बिकॉज हाउ हाउ मच कैन यू एक्सप्लेन? एंड द आइडिया इज कि यहाँ पे जिसकी आप बात कर रहे हैं कि रिलेटिव्स अगर कंसर्न दिखा रहे, वो कंसर्न नहीं होता, वो ताना मारने का एक बहुत ही एम्पथेटिक और खूबसूरत तरीका होता है। हम्म। तो एंड आई उनकी थिंक वो उस हर कोशिश को सिचुएशन वहीं में तक होता है। रहने दें। आई गेस वो हर सिचुएशन हर में होता सिचुएशन नहीं होता है। है। या इवन इफ यू आर बिल्कुल। वेरी सक्सेसफुल दे विल गिव यू थॉट्स। या सक्सेसफुल, इट्स नॉट सक्सेस, इट्स दैट देर आर सर्टेन पैरामीटर्स इफ यू आर, इनफैक्ट मतलब ये होता है ना कि जब तक you're normal, you're not that recognized, everybody would come and resonate with you. But the moment you're a little different from the crowd, they're like, why is this happening to her, why not to my child? तेरी सफेद शर्ट मेरी सफेद शर्ट से ज्यादा सफेद कैसे है? वॉशिंग पाउडर, निरमा। तो ठीक है, यू कांट बी सबकी पसंद। यू कांट बी निरमा। सुना राइट। है ना वो एड, लाइक दैट, सबकी पसंद निरमा, सबकी पसंद है तो वो तो वॉशिंग कोई नहीं पाउडर बन जाओ, वरना होता। बने रहो इंसान, इग्नोर करो। या सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पॉडकास्ट आपको कहीं हम इसके बाद लोग क्वेश्चन ना करने लगे कैसी बातें कर रही है ये। नो, आई वांटेड टू कीप इट इनफॉर्मल बिकॉज मैंने देखा है, लाइक सपोज अगर कोई जनरल होता है ना इंटरव्यू या पॉडकास्ट, उसमें पीपल टॉक अबाउट अचीवमेंट्स, कि आपने ये कैसे किया, और जो स्पीकर है वो भी बोर फील करता है कि सेम चीजें हम बार बार बता रहे हैं। सो आई नहीं फील। पर मेरा ना एक, नहीं बट मेरा एक ये भी है ना कि चेंज मेकिंग और एनीथिंग इज नॉट जस्ट अबाउट अचीवमेंट्स। आई वांट पीपल टू नो कि अगर आप 17-18 साल की उम्र, क्योंकि अभी ना ये बहुत ज्यादा प्रेशर भी बिल्डअप हो गया है कि अगर आप 17-18 साल की उम्र में कुछ ऐसा करके नहीं बैठे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, चिल। कुछ लोग हैं, ब्लेसिंग्स थे शायद हमारे पास कि हमें जरा पहले समझ आ गया कि अच्छा दुनिया की रीत है कि आपको अचीव करना होता है। आपको कुछ ऐसा, मुझे कुछ ऐसा दिख गया, कई लोग हैं मेरे उम्र के, मुझसे छोटे भी काफी लोग हैं, कुछ ऐसा दिख गया जो लगा इस पे कर सकते हैं, सराउंडिंग्स इतने सपोर्टिव थे। पर अब उस वजह से ना ये जो यंग एंड यंगेस्ट को जो इतना ग्लोरीफाई किया गया है, इस वजह से मैं अपने आसपास देखती हूँ ऐसे कई लोग हैं जिनको, अच्छे लोग हैं जो कर सकते हैं, उनके मन में एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है, जहन में यहाँ पे बैठ जाता है कि अरे हमने, अब हम 21 तो हमने पार कर लिया, अब हम तो यंगेस्ट तो किसी चीज में नहीं होंगे, क्योंकि 21 साल के सीईओज हैं, 21 साल के फाउंडर्स हैं, 21 साल के क्या नहीं है, यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर है अभी डी डी गुगेश, अगर मैं बात कहूँ तो। बहुत लोगों के जहन में ये बड़े, अच्छा 30 पार हो गया, अब तो मैं फोर्थ 30 अंडर 30 नहीं पहुंचूंगा। ठीक है भाई, नहीं पहुंचना, सस्टेनेबिलिटी यहाँ भी है, लाइफ की सस्टेनेबिलिटी। तो ये मेरा एक है कि दिस इज नॉट ऑल अबाउट द ग्लिट्स एंड लाइक गुड गुड पार्ट ऑफ इट, इट्स फाइन। टोटली है। या सो आई वाज आस्किंग दैट वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जो आप अगर सोचते हो लाइक फ्रॉम सिंस योर चाइल्डहुड जर्नी टू नाउ, कि इस चीज को मैं चेंज कर पाती या फिर ये इस वे में होता, तो इट वुड बी मच बेटर, इफ एनीथिंग इट कुड। I mean that's making me question and think a lot about like I don't know. I don't have. I'm so sorry for that interruption once again. Yeah. Um, if one thing that I would like to change would be, um, if only I could have had more time to read. That's one thing. Because after coming to a certain age, I've realized that
a lot of education which I have received, formal education, उससे ज्यादा सीखने को मुझे मिला है from the informal education, from the novels that I've read, or the authors that I've interacted with, or the different things that I've taken courses on. So I think that is something that I would like to change. Ki if only my surroundings would have allowed me not to prioritize only the formal education, the school education, because उस पे बहुत ज्यादा focus हो जाता है. That okay, you go to school, you have your homework, you have your assignments, you have your examination. Examination में अच्छे marks आ गए. That education is thought of to be okay, fine, अच्छा कर लिया बच्चे ने. But then there are so many things that you come to know when like beyond that. So that is one thing that I would like to change. And the second thing would be I would have liked to be born not in a nuclear family. मैं न्यूक्लियर फैमिली में पली बड़ी हूँ, सो आई हैव ओनली बीन सराउंडेड बाय माय पेरेंट्स. दादा दादी के साथ मैं बहुत ज्यादा रहना नहीं हुआ. तो आई रियली And आइडियलाइज I feel that like living in a joint family or living many with a of lot of my people. friends are there, like my Punjabi friends are there, they live in a joint family. Mm-hmm. तो बहुत बार ऐसे jealous भी feel होता है कि काश वैसी फैमिली होती. So yeah, okay. Yeah, न्यूक्लियर फैमिली में ये भी there are so many things that you cannot experience. Yeah. Yeah, so my last question would be कि do you feel like कि जो school curriculum होता है education system है, तो in that we teach lot of Mm-hmm. subjects, like for example मेरे time पे in small classes I used to have moral science, जिसमें we used to learn Mm-hmm. like literally हम science के subject learn करते हैं ना, वैसे हम याद करते थे कि कैसे हमारे values होने चाहिए, behavior. Right. वैसे ही same with environmental science. We just learn and write in, answer sheets. So बिल्कुल. how you feel कि इसको, we need to change that, कि जो students पढ़ रहे हैं, be at any level, college हो, school हो, उनको ये feel हो कि it's not kind of, Mm-hmm. आपको special effort डालना पड़ेगा. Because I feel, whenever I read about any young change maker or change maker for that sort, आई फील कि हर कोई चेंज मेकर हो सकता है. आई कैन लाइक लिव माई नॉर्मल लाइफ एंड आई कैन स्टिल बी अ चेंज मेकर. बट एजुकेशन के थ्रू हम कैसे चेंज कर Absolutely. सकते हैं, लाइक एजुकेशन में हाउ यू फील यू कैन चेंज दैट. One thing that education can aspire to become in the coming days would be that even till now, a lot of education is very theoretical. There is not enough experiential learning, right? मतलब to give you an example, आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है प्लास्टिक इज बैड, सिंगल यूज प्लास्टिक, दिस दैट. फिर आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो, उस पे आपको मार्क्स मिलते हैं इन एंड यू सबमिट दैट इन अ प्लास्टिक फाइल. सो ये जो प्रॉब्लम है ना, इवन व्हेन वी आर टॉट अबाउट एनवायरमेंटल एजुकेशन, टीचर्स टेल इट लाइक दिस टू अस ना, कि ये 4 मार्क्स का आएगा, दीज आर द थिंग दैट यू शुड रिमेम्बर. ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो ये दीज आर द थिंग्स यू नीड टू रिमेम्बर. सो नोबडी इज रियली delving into what chlorofluorocarbons are. They are just remembering, okay, fine, CFCs का अगर full form लिखना है तो I'll write this. That's it. So the teachers need to be sensitized, first of all, before we talk about the curriculum. curriculum में तो है, एनसीईआरटी ने या बाकी भी जो curriculums है उन्होंने ऐड कर दिया. इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी, we have subjects, it's compulsory every alternate semester for us students to take up a paper in environmental science. But there's nobody who is teaching us environmental science. We are only being taught how to score in that paper. And students also take it that way, that okay, fine, ये एक मेरा पेपर है जिसमें मैं आसानी से स्कोर कर लूंगा या कर लूंगी. So that is there. The teachers need to be sensitized and respected. क्योंकि एक ईवीएस के टीचर को, जैसे आपने कहा भी साइंस की बात, एक साइंस का टीचर और या एक साइंस के प्रोफेसर को जो इज्जत दी जाती है, आई डोंट थिंक एन एनवायरमेंटल साइंस टीचर इज ट्रीटेड विद द सेम रिस्पेक्ट. So that has to change first and foremost. And then obviously change is a slow process. It's not going to be like आज हमने सोच लिया कल ऐसा हो जाएगा. So that is that. Yeah. Yeah. Okay. So next question is कि like you have been a TEDx speaker. So would you like to share, like have you ever dreamt from like childhood कि मुझे एक ऐसा public speaker बनना है and I have to influence the people, inspire the people, या फिर वो एक flow में हुआ, you learned lot of things and you did that. So
फ्लो में हुआ मेरे साथ तो ऑनेस्टली दिस वाज नेवर अ पार्ट ऑफ द प्लान. सॉफ्ट मूव शुरू करना वाज आल्सो वेरी ओके. दिस इज समथिंग दैट आई फील आई शुड डू समथिंग अबाउट. ठीक है, करके देखती हूँ. एंड देन इट बिकेम एन ऑर्गेनाइजेशन. It wasn't the plan very initially that I have to build an organization. उसका एक logo होगा, उसका एक नाम होगा, उसकी एक पहचान होगी. It was an idea, it was a concept, and I started working on it. Similar with TEDx, it was never that okay मुझे TED देना है. खैर वैसे on a lighter note, I used to just joke around with my friends. जैसे कुछ किसी ने मुझसे कुछ भी पूछा, तो if I speak for 1-2 minutes उसके बाद I was like thank you for coming to my TED talk. तो वो थैंक यू फॉर कमिंग टू माई टेड टॉक. हाँ, मेरे जिस दिन मेरी टेड की वीडियो रिलीज हुई ना, मेरे एक दोस्त ने मुझे वीडियो भेजा था कि देख तू ये करती थी, अब तो असली टेड टॉक पे पहुंच गई. आई वाज लाइक या. बट एज इट वाज नेवर लाइक चेक बॉक्स पे है कि टेड देना है, नहीं ऐसा कुछ. Yeah. फ्लो में होता गया. Okay, so now we have come to last segment. So here we will do a good like rapid fire sort of thing. So like you have to ओके. answer in one word, of course. So first question to you, वन वर्ड श्योर. yeah, yeah, one change life changing book you would like to suggest to our readers. लाइफ चेंजिंग बुक. Yeah, लेटर्स टू अ यंग पोएट बाय रिल्के. okay. Any one particular quote that you strongly believe? द वन दैट आई ऑलरेडी मेंशन्ड. Motivation is for amateurs, the rest of us just sit down and do the work. Okay. Then last is that if you know had a chance to do a dinner with three most influential Hmm. people, so who would they be? Like they Hmm. can be anyone. No, anyone. Yeah, yeah. So dead or alive? Dead and Like alive. they can be people who are dead as well. Yeah, Dead yeah. and alive both. One would be Sushmita Sen. ठीक है. Hmm. One would be Sushmita Sen. Um, one would be, who do talk about? Frederick Nietzsche. He's a writer, not here anymore. And third would be my grandmother. Yeah, I Yeah. really miss her. Okay. Last question. That any particular movie that you feel it has inspired you a lot, like or Mhm. you find it very relatable to your personal journey so far. So, Tamasha. Tamasha. oh, is it nice? Yeah. Okay. So yeah, that was the question. So I hope you enjoyed all the questions. So I really enjoyed the questions. I think you could see that. yeah, yeah, I hope you were able to gauge enough the way you wanted to. आपको जैसे सवाल और जवाब आप आपको चाहिए थे, आई होप वो भी सेटिस्फाई हुआ हो. yeah, yeah. It was, I think, the most interesting ones because अभी तक like जितने भी speakers के साथ we did the interviews, they were very formal. Like मैंने ये किया, फिर I did this, did that. So yeah. So I hope you enjoyed it and thank you वो so much. गूगल पे है. Yeah. You're welcome. वो है गूगल पे, मतलब देख लो. But ठीक है. वो कौन, मुझे घिसा पिटा लगता है बोलते हुए बार बार. So yeah, it तो वो was a तो very मेरा great हो गया. conversation with you, Dwishojoyee. Thank you so much for being part of this show. We are really, really so honored to have you. So yeah, I'm really honored to be here today, and thank you so much for having me. Sorry for the inconveniences. मेरे पापा बीच में आ गए थे. Right. it's okay. मेरे यहाँ तो भी हाँ, होता न्यूक्लियर रहता है. प्रॉब्लम हो गया. Yeah. हाँ, तो पहले मैं बहुत चिढ़ जाती थी. Mhm. बट आई एम लाइक ओके ठीक है, कोई बात नहीं. तो हाँ, फॉर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंसेस एंड सॉरी फॉर पोस्टपोनिंग दिस सो मच. आई होप ये अगली बार But जब हम it ऐसे was worth मुलाकात करें it. तो वो ना हो. I guess postponing was worth it. Like it was interesting. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर बीइंग सो ग्रेशियस टू मी. Thank you so much.